पिछले वीडियो में मेरे अवतार ने आपको समझाया था कि किस तरह से नया एसएटी बदल गया है कि अब वो टोटल 134 मिनट्स यानी 2 घंटा 14 मिनट का टेस्ट है। टोटल 98 क्वेश्चंस हैं और अब इसमें लंबे पैसेजेस नहीं आते हैं। यू कैन यूज कैलकुलेटर इन बोथ द सेक्शंस एंड द रिजल्ट्स विल बी फास्टर। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एसएटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की और हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी से किस स्ट्रेटजी से हम बहुत अच्छे आंसर्स लेके आ सकते हैं। अब इनको समझाने के लिए तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा, एवेटार से काम नहीं चलेगा। सो whenever you do a question of the English section, use some simple strategies। मैं कई लोगों को अभी न्यू एसएटी के टेस्ट पेपर्स करवाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। और टाइम लगाने का मेन कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। It is very important that you remain very focused and filter out unnecessary information as soon as possible, so that you focus on only the decision triggers and you get to understand the answer as soon as possible। और यही चीज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं। और समय बचाने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उसके साथ अपनी मेंटल एनर्जी भी बचा रहे होते हैं। सो व्हेन यू इन्वेस्ट मोर टाइम, यू काइंड ऑफ चैलेंज योर माइंड एंड यू अप्लाई योर माइंड मोर। तो भाई अगर आप फास्ट करते हो तो अपनी मेंटल एनर्जी भी तो बचा रहे होते हो। तो जरा हम समझते हैं कैसे हम इसको फास्ट कर सकते हैं और किस तरह से फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन। सब लोग जरा अपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए और सोचिए कि आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्रेट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको पॉज करके खुद किया होगा। नाउ लुक एट दिस, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। द कीवर्ड हियर इज कंजेक्चर, राइट, एंड इट सेज दिस कंजेक्चर। मतलब ये जो फिल अप द ब्लैंक है, यहाँ कहीं कंजेक्चर से रिलेटेड बात आनी चाहिए है। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजेक्चर नाउ? कंजेक्चर इज सरमाइज, गेस, व्हेन यू ट्राई टू फिगर आउट समथिंग, सम गेस वर्क। Now, which word is related to conjecture here? The word is speculates, and that's it. The answer is speculates. अब देखिए मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं इसको, and I'm able to figure out the right answer by looking at the keyword। चलिए जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड है वो है continuously worked, एंड दिस एफर्ट, ये जो कंटिन्यूअसली वर्क करने वाला एफर्ट है, दिस डैश एफर्ट। अगर कोई कंटिन्यूअसली काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी विल से मैंडेटरी, परसिस्टेंट, ऑफेंड या इम्पार्शियल। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज परसिस्टेंट, राइट। Continuously work means somebody who is persistent, this persistent effort, that's it। So, instead of focusing on lot of information, it is important to focus on decision triggers। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल, विच चॉइस कंप्लीट्स द टेक्स्ट विद द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रिसाइज वर्ड। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद ऑप्शंस को देखिए, ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड at some point in history, some place। Now this is again important how you read it, you don't have to be very precise। At some point in history, these nation legislators, some legislator is there, some parliamentarian seems like, continuously work to promote public health। Now all this information is extra, इसका नाम क्या है, कौन से ईयर में हुआ, but this guy work continuously to promote health, and this dash effort, it has to be persistent। Can you see that it is very easy? So this is how you are supposed to read। Look at this question now. Again, you can pause, do it yourself, and then we will do it together। Good, I hope you made an attempt at finding the right answer। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब कुछ प्रिंसिपल की बात की गई है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ट्राइबल नेशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस are partnering with each other for some kind of work related to health। So there are two parties, they are partnering with each other, they're working as partners to accomplish some common goal, right? Now see, this is how you should understand the premise। you're not supposed to go into the depth of it। गलती ये करते हैं हम लोग, स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनको एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ने को सिखाया जाता है, and that's why they lose this art of being a big picture reader। here you are supposed to be a big picture reader। So some kind of collaboration is being discussed, a collaboration between this tribe
and this university dash this. तो इससे क्या पता लग रहा है? एक पहले उन्होंने प्रिंसिपल बताया और फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका कि ये जो है इस मॉडल को डैश करता है, एंड देन देयर इज एन एक्सप्लेनेशन. This that citizens work together and whatever it is, no. So यहाँ पे क्या हो रहा है? ये first they told a principle, then they gave an example. So the answer has to be exemplifies this model. Can you see that finding the answers becomes so very easy when you look at when you learn this technique? But yes, it requires practice, and you have to do a lot of questions so that these patterns get fixed in your mind. You should know what is the nature of the question, and accordingly you should figure out what would be the best choice in the given scenario. So this is how you are supposed to approach your reading questions. It's actually very easy, but it gets daunting if you try to do over analysis. एक आधा कोई कठिन सा question देखते हैं. Let's say we do this one. Okay. Now look at this. How to approach the question is important. I have chosen a random question here. Whenever you start a question, first read this part, which is करना क्या है. भैया, which choice best describes the function of the underlined sentence? तो इतना सारा पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ये underlined sentence को पढ़ लेना चाहिए है क्या. The landscape outspread below her seemed an enlargement of her present mood. ओहो, बड़ा poetic है. And she found something of herself in its calmness, its breadth, its long free reaches. By God, I mean, she is kind of finding some similarity between the land on which she is standing and herself. Okay. And as I see, fitting background of her own sensation and some kind of poetic expression is here. She's standing on some ground and she finding that the serenity and the calmness of the ground is similar to her own mood. ठीक है, इस तरह की कुछ कहानी हो रही है. Now let me try to find out. Creates a detailed image of physical setting. I don't see any detailed image. Detailed मतलब बहुत लंबी चौड़ी डिटेल होनी चाहिए. It establishes that a character is experiencing an internal conflict. भाई लग रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो. राइट, फीलिंग्स वाली बात है, इमोशंस है, बट देन इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट? आई डोंट नो. Makes an assertion that the next sentence then expands on. तो अगले सेंटेंस में कुछ और एक्सपांशन मतलब कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कामनेस का. ऑन द नियरर स्लोप्स द शुगर, मैं आगे के सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. स्लोप वगैरह की बात कर रहे हैं, लाइट आ रही है, लो डाउन वाज मासिंग ऑफ ग्रे और लोअर डाउन, मतलब अलग अलग तरह के सीन्स बता रहे हैं, बट उसके ऊपर मतलब कामनेस है या नहीं है, आई डोंट सी. हो सकता है ये हो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर. ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिख रहा. Illustrates an idea that is introduced in the previous sentence. So let's see what is the idea introduced in the previous sentence. Lily had no real intimacy with nature, but she had a passion for the appropriate and could be keenly sensitive to a scene which was the fitting background of her own sensations. Fitting background of her own sensations. तो उसके जो सेंसेशंस हैं उससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड है. लैंडस्केप outspread below her seems like there is a connection between fitting background of her sensations and this is the background, right? Illustrates an idea that is introduced in the previous sentence. Pretty much this looks as the like the best choice. Now this is again important. आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो सबसे ज्यादा फिटिंग है. हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा ना लगे, but in the given scenario that is the best option. So I always say don't look for the right answer, look for the best answer. The best answer is the one which has got strongest evidence. वो आपके emotions के ऊपर based नहीं है, उस particular scenario में, उस particular premise में, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर evidence है उसको select कर लीजिए. So I have just tried to explain the whole thing in very very simple Hindi and English so that you understand the अंडे का फंडा. The point is you should understand stuff. My purpose is to make the things as easy as possible instead of complicating them with lots of strategies and global gyan. So yeah, it is important for you to practice and do as much work as possible. The more you practice, the better
these questions would be for you, and you'll find that you would be able to get great scores. My name is Rajiv, and I have been training on SAT for almost 15 years. And we talk about SAT in terms of very, very simple strategies. So when you practice them, you develop proficiency and you score high marks in the final test. All the best to you. Bye bye.